सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 मेन टॉपिक्स को। नंबर 1, टाइप्स ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इफ यू वांट टू स्टडी इन द यूएसए। नंबर 2, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट दीज कॉस्ट्स। एंड लास्टली नंबर 3, what are some of the tips and tricks जिनको यूज करके we have helped over 5,000 students who could save thousands of rupees in their study abroad process. So watch this video till the end. So recently हमने 2 पॉडकास्ट वीडियोस YouTube पर डाले, जिसमें से एक में one of our previous student उदित गोयल who went to Rochester University with a 32 lakhs worth of scholarship shared his experience and how he landed a job. And second video में 2 of our Boston University admits Harshul and Hitanshu who shared their experience and how they landed a top offer without a GRE or a GMAT. अगर ये वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद आप वहां जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर लाइकिंग दोज वीडियोस एंड उन वीडियोस को देखकर काफी सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट्स में और डीएम करके बताया कि दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट द एक्चुअल कॉस्ट्स इन्वॉल्व फॉर स्टडीइंग इन यूएसए एज एन इंडियन स्टूडेंट एंड डिफरेंट काउंसलर्स आर गाइडिंग देम डिफरेंटली। सो इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट एंड टू एंड कॉस्ट्स इन्वॉल्व इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन यूएसए एंड ऑल्सो हाउ यू कैन कैलकुलेट दोज कॉस्ट्स। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 3 मेन टॉपिक्स को। नंबर 1, types of cost involved if you want to study in the USA. Number 2, detailed explanation and how to calculate these costs. And lastly, number 3, what are some of the tips and tricks that you can use and save up to thousands of rupees in your applications process. So इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना and do like, share and subscribe to our channel if you want to get notified about more such informational videos. So सबसे पहले friends, let's understand what are the different types of costs that are involved in the study abroad process and इन costs का क्या मतलब होता है। सबसे पहले आती हैं प्री एडमिशन कॉस्ट्स। प्री एडमिशन कॉस्ट्स वो कॉस्ट्स हैं एंड एक्सपेंसेस होते हैं फ्रेंड्स जो आपको बियर करने पड़ते हैं बिफोर योर एडमिशंस, विच मीन्स अभी आपको ऑफर नहीं आया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, आपको खाली अप्लाई करने के लिए ये कॉस्ट को बियर करना पड़ता है। ये कॉस्ट को आप फर्दर 3 तरीके की कॉस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। First, test preparations cost. These are the costs involved for booking and taking the tests like IELTS, GRE, GMAT, etc. Exam like IELTS can cost you around rupees 16,250 if you are taking computer delivered IELTS, while exams like GRE will cost you around 22,550. यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इन एग्जाम्स के जो रिजल्ट आते हैं उन्हें आपको ऑफिशियली रिपोर्ट भी करवाना पड़ता है टू द यूनिवर्सिटीज फ्रॉम डिफरेंट टेस्ट टेकिंग इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली। सो इफ यू आर रिपोर्टिंग योर IELTS स्कोर ऑफिशियली, आपको फर्स्ट 4 रिपोर्ट्स फ्री मिलते हैं एंड आफ्टर दैट यू विल बी चार्ज रुपीज 250 पर रिपोर्ट। एंड फॉर GRE आपको फर्स्ट 4 रिपोर्ट्स फ्री मिलते हैं एंड उसके बाद यू विल बी चार्ज with rupees 2,300 approximately per GRE report. Also, if you're taking some coaching or training to crack these exams, तो वो कॉस्ट भी आपकी ऐड हो जाएगी। एंड वीडियो के एंड में हमने बात करी है कि कैसे आप इस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सेकेंड तरीके की प्री एडमिशन कॉस्ट आती है फ्रेंड्स योर ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट इवैल्यूएशन कॉस्ट्स। यहाँ पर 2 चीजें हैं फ्रेंड्स, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट इवैल्यूएशन कॉस्ट। पहले इनके मीनिंग समझते हैं एंड देन इनकी कॉस्ट कितनी होती है। सो फ्रेंड्स, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स मीन आपको अपने होम कंट्री की यूनिवर्सिटी या कॉलेज से अपनी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स एक सील्ड एनवेलप में फॉरेन यूनिवर्सिटी को भिजवानी पड़ती हैं, जिसके कि फॉरेन यूनिवर्सिटी को ये पता चलता है कि ये जो डिग्री या मार्कशीट आपने एप्लीकेशंस में जिनकी सॉफ्ट PDF कॉपी अपलोड करी है वो जेन्युइन है एंड फेक नहीं है। इस चीज की कॉस्ट वैरी करती है आपकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी पर, लेकिन एवरेज नंबर्स की बात करें तो ये कॉस्ट अराउंड 5,000 to 7,000 रुपीज आएगी। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्ट इवैल्यूएशन कॉस्ट पर। ये वो कॉस्ट है जो आप पे करते हैं जब आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी बोलती है कि उनके ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट इवैल्यूएशन की भी जरूरत है through organizations like WES to evaluate that your degree in your home country and its credits are sufficient to make you eligible to apply to their university. So for this, you will be paying approximately rupees 18,000 to organizations like WES to evaluate your degree and report to your target university, जिस पे they charge around rupees 5,000 rupees per report. And वीडियो के एंड में हमने बात करी है कि कैसे आप इस कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। So watch this video till the end. Now there is third type of pre-admission cost, which is your application fees. This is the application fees that you pay to the university directly in order for them to assess your application. ये cost भी university to university differ करती है, but approximately this comes around to be rupees 5,000 to 7,000 rupees. Now that we have discussed the pre-admission costs in detail,
Let's come to the second type of cost, which is the post admission costs. Post admission cost वो cost होती हैं जो आपको bear करनी पड़ती हैं post you have received your offer and before landing into the foreign country. इस cost में majorly 3 type की cost आती हैं. सबसे पहले आती है your initial deposit fees. ये फीस वो फीस है जो आप अपनी यूनिवर्सिटी को, जिससे आपको ऑफर आया है, आप उसको पे करते हैं. काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर सिर्फ आपको ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ता है, कोई डिपॉजिट फी नहीं होती. You will find these details in your offer letter, so please go through it very carefully. And obviously, your initial deposit is ultimately adjusted in your overall tuition fees. Second type of post-admission cost होती है your visa processing fees. ये वो फीस है जो आप directly embassy को पे करते हैं while filing your student visa. Talking about USA, currently this cost will be around rupees 42,000, depending upon the US dollar conversion rate, obviously, and this will include your DS 160 and Sevis fee. Third type of post-admission cost होती है friends your pre-departure fee. This is the cost that you will incur once your visa is granted and you will be preparing for your arrival in the USA. This will include your flight expenses, which would be approximately rupees 1 lakh, and your initial stay at Airbnb or a hotel until you finalize your accommodation, which will be again around rupees 20,000 rupees. Now, before we proceed to the third and last type of cost involved, आपको एक चीज पर बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर. I am talking about the expenditure that you will bear from the pocket during different phases of your admissions process. But before filing your visa, you will also need to show your 1-year tuition fee and living expenses for issuing your I-20. ये आपको किसी को पे नहीं करना होता, बट सिर्फ शो करना होता है, जिसको वेरीफाई करके यूनिवर्सिटी आपको I-20 इशू करती है. बट इसकी बात हम एक सेपरेट वीडियो में करेंगे. नाउ कमिंग टू थर्ड टाइप ऑफ कॉस्ट, विच इज योर पोस्ट अराइवल कॉस्ट. ये वो कॉस्ट है जो आपको बियर करनी पड़ती है once you have landed in the USA. This includes basically 2 types of costs, your tuition fee and your living expenses. सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फीस की, which is mentioned on your offer letter as well as your I-20. But on an average per year ये कॉस्ट आपकी रहती है around rupees 35 to 40 lakhs depending upon your university. इसके लिए आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं before filing your visa application. Also, please note that this is the average tuition fee cost for top 100 US schools, since we do not deal with low rank partner schools. This fees can go even higher up if you're aiming the just top 10 schools where your total fee can be up to more than rupees 1 crore as well. दूसरी post arrival cost है आपके living expenses, which includes your rent, travel, food, etc. And if you're taking a shared hostel, it can cost you up to rupees 40 to 50,000 rupees per month and can even go up to rupees 1,40,000 if you're going for a separate studio apartment. Other costs like food, travel, internet, shopping, etc. would be approximately around rupees 60,000 rupees per month depending upon your location as well as your lifestyle. So अभी तक friends आपने जाना 3 different types of costs के बारे में and उनकी approximate calculations. अब हम बात करते हैं उन टिप्स एंड ट्रिक्स की जिनको यूज करके वी हैव हेल्प्ड ओवर 5,000 स्टूडेंट्स हु कुड सेव थाउजेंड्स ऑफ रुपीस इन द स्टडी अब्रॉड प्रोसेस. सबसे पहले बात करते हैं प्री एडमिशन कॉस्ट्स की. प्री एडमिशन कॉस्ट्स में आपकी 3 कॉस्ट थी: टेस्ट प्रेप, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट इवैल्यूएशन एंड एप्लीकेशन फी. टेस्ट प्रेप में टू सेव अप योर कॉस्ट you can enroll with a consultant which includes test prep training in their service. For example, at Ace My Prep, we provide English language training to all our students who enroll with us, and our average IELTS score result is 7.5 bands. Not only this, we have also helped students getting waivers for GRE exams. Like you have seen in our previous podcast video how Harshul and Hitanshu got into Boston University without a GRE exam. उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. इस वीडियो के बाद जाकर उस वीडियो पॉडकास्ट को आप जरूर देखिएगा. Secondly, to save your transcript evaluation cost, check with your university if you still require a WES if you have a 4-year degree. Some universities do waive off WES evaluation requirements if you have a 4-year bachelor's degree from India. Thirdly, to save up on your application fee, check upcoming events and webinars of your dream university. If you attend those webinars, ask questions in them and show the presenters that how inclined you are towards joining their prestigious university. They might offer you application fee waivers at the end of those webinars. Not only this, you can also mail your department at your university to waive off your application fee by presenting your profile in a good way and highlighting any financial difficulties you might be facing at the moment. So, अब अगर हम बात करें post admission costs की, so you can save thousands of rupees by using these tricks. सबसे पहले तो book your temporary accommodation at least 5 kilometers away from the core city. The travel is not that difficult, but you will save huge amounts in rent. You can take international student private hostel and dorms for the time as you finalize accommodation. Secondly, check and book flights via incognito tab.
Also, book your flights 1 month in advance to save on cost surges. Try to take a flight that lands a little later in the afternoon in the USA, and that too on Wednesday or a Thursday, since flight tariffs are cheapest. Now friends, बात करते हैं about your post arrival costs, कि जिसमें सबसे बड़ी कॉस्ट होती है योर ट्यूशन फी। सो अगर ट्यूशन फी सेव करनी है तो यू शुड अप्लाई बिफोर द राउंड 1 डेडलाइन टू बी एलिजिबल फॉर अ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मोर देन 60% of our students receive a merit based scholarship just by applying before the round 1 deadline. Secondly, within your application, put yes to the financial aids required section and do apply for university level scholarships as much as possible. तो friends, ये वो कुछ tips and tricks थी जिसको यूज करके आप thousands of rupees सेव कर सकते हैं अपनी स्टडी अब्रॉड प्रोसेस में। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट्स हैं या आप चाहते हैं एस माई प्रेप हेल्प करे आपको आपकी स्टडी अब्रॉड प्रोसेस में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ऐड किया है जिस पर क्लिक करके आप एक फ्री स्टडी अब्रॉड स्ट्रैटेजी सेशन बुक कर सकते हैं विद आवर एक्सपर्ट्स, जहां पर यू विल गेट 3 थिंग्स। फर्स्ट, अ लिस्ट ऑफ टॉप 5 यूनिवर्सिटीज दैट यू शुड अप्लाई एज पर योर प्रोफाइल। सेकंड, courses with best possible ROI. Third, salaries and job prospects post your studies in USA. So click on the first link in the description to schedule your study abroad strategy session, and video अगर informative लगा तो please subscribe, like and share with your friends जो USA में apply करना चाहते हैं, and they might end up saving thousands of rupees in their study abroad process. Stay tuned for more informative videos.